तो भाई अब आ गए हम लोग फॉरेक्स की तरफ। सम नंबर 8 क्या लिखा हुआ है महाराज? यूएस इन्वेस्टर चोज टू इन्वेस्ट इन सेंसेक्स फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। यूएस इन्वेस्टर है बंदा। The relevant information is given below. This is a case of international investing, right? Size of investment $20 lakh invest किए हैं. Obviously, if he has invested, he has to sell dollars and buy rupees to begin with. तो 4250 पे उसने क्या होगा? Sell dollar, and then obviously after 1 year he is going to buy dollar at 43.90. तो वहाँ there is a marked appreciation in dollar or depreciation in rupee. Obviously, that would reduce his returns. उसने सेंसेक्स में पैसे डाले 3256 which after 1 year became 3765. तो कितना अप्रिसिएशन आया? 3765. $15.633 कितना अप्रिसिएशन है? ठीक, इन्फ्लेशन दिया हुआ है यहाँ। कंप्यूट द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर यूएस इन्वेस्टर, यानी वो घर कितना ले जाएगा एक्चुअल में। तो सीधी बात है यहाँ, डॉलर इज अप्रिशिएटिंग तो रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। सीधा सीधा हिसाब, क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन शॉर्टकट से बता रहा हूँ, ठीक है। लॉन्गर मेथड भी है, पहले कन्वर्ट करो, फिर इसके यूनिट्स खरीदो, देन यूनिट सेल करो, बाद में अगेन कन्वर्टेड बैक टू डॉलर्स। दैट इज द लॉन्गर मेथड। Just doing it because we are just rushing through it. तो एक बार ये मेथड से भी देख लेते हैं। कितना आएगा डिप्रिसिएशन? 3.1891%। नॉमिनल रिटर्न क्या बन जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा ऑब्वियसली। 15.633 वो कमा रहा है वहां। $1.11945 आ रहा है, तो वो निकाल दो, क्या आएगा अपना? निकाल दो तो 11.945%। ये आ गया अपना पहला जवाब। डन। कंप्यूट द रियल डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ये जो है दिस समथिंग न्यू दैट आई हैव आस्क्ड, राइट। ये भी काफी फ्रेश ही था पहला भी, लेकिन वो मैनेजेबल है। सेकंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आई वुड लाइक योर अटेंशन। Again, my method of solving would be a little different from the institute. Real appreciation, depreciation of rupee. अब इसका मतलब क्या है आपको अभी बताता हूं। मानिए कि डॉलर बाइंग, when the bank is buying dollar, now rate is 4250, 1 year rate is 4385. It should have been how much considering the inflation in mind? इसके दो तरीके हैं। I am following the second method, right? एक बार समझ लो, what should have been the rate as per purchasing power parity theory, where inflation is taken into account. 42.50 into 1.09 divided by 1.05. What should have been the rate? $44.119. ये रेट होना चाहिए, but rate is how much? 43.85. So basically the dollar should have appreciated to 44.11905, but has only appreciated in real life to 43.85. Conversely, the rupee should have depreciated from 1 divided by 42.5 to 1 divided by 44.11905, right? तो यहाँ
आरटीपी कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, May 22 के लिए। तो ऑब्वियसली आई वोंट गो टू द डिटेल्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये सब, ठीक है। So the rupee depreciation has not been as steep as was projected by purchasing power parity theory. So conversely, जितना गिरना चाहिए था उतना गिरा नहीं है, मतलब there is an appreciation। कैसे मालिक, देख लेते हैं यहां। बाइंग में आया ये, वैसे आपको सेलिंग में, मतलब एज अगेंस्ट पीपीपी थ्योरी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सजेस्टेड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी एंड एक्चुअल्स, राइट, तो ये अप्रिसिएट हो गया एक्चुअली। वैसे आप सेलिंग का भी कर सकते हो, $42.60, एक्चुअल्स 43.90, pardon me my handwriting, राइट। तो होना कितना चाहिए था, 42.60 जगह नहीं है, तो I'll just do it on calci, 44.223। Did the dollar appreciate as much as suggested by purchasing power? No, right, mean other words the rupee has not depreciated as much, so यहाँ भी appreciation बनेगा, ये selling का, right। यहाँ जगह ही नहीं है, चलो सीधा सीधा आंसर लिखते हैं ना। .7301 appreciation, right। बेसिकली आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, रिमूव द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट एंड मैच इट विद द स्पॉट 1 year ago, राइट, या फिर यू कैन पुश एवरीथिंग टू द नाउ रेट्स, राइट, एंड देन कंपेयर इट, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड्स, इंस्टीट्यूट टू माय नॉलेज हैज फॉलोड द फर्स्ट मेथड, जहां उन्होंने बैकवर्ड किया, दे टुक द नंबर्स बैक and did it, I took the numbers forward and did it, answer would remain the same, right। What should be the exchange rate if relevant purchasing power parity holds good? भाई हमने निकाला था ना, यहाँ ये आ गया, तो अलग से मेहनत करें, right। Bank's dollar buying rate would be 44.119 and selling rate would be 44.223। अरे भाई साहब, what will be the real return for an Indian investor in Sensex? 15.633 is, जब भी वर्ड रियल यूज किया जाता है, इन्फ्लेशन इंपैक्ट हटाना है अपन को, राइट। यहां भी वही मैंने किया, रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, व्हाट आई डिड, I took everything forward and calculated, otherwise you take everything backward and calculate, it works the same, right। तो 15.633% is the return to the Indian investor, that is nominal return, inflation impact हटा दो, आपका आंसर आ गया।
6.085। तो ये थोड़ा नया सम था, मजेदार। देखो इन लोगों ने लंबे मेथड से किया है काफी। फर्स्ट दे कन्वर्टेड इट, राइट, number of units purchased at T1, right, sale of Sensex, right, फिर converted back into US dollars, so 20 लाख डाला था, अभी आ गया इनके पास 22,38,846, nominal rate to the return to the US investor 11.94। मैंने डायरेक्ट मेथड से किया था। रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन देखो जैसे मैंने बताया था, did only for buying, can do for selling as well, right? तो इन्होंने backward किया, they bought this, remove the inflation impact and got an answer of 0.61%। ये रहा अपना appreciation। सेलिंग किया ही नहीं इन लोगों ने, राइट। एक्सचेंज रेट इफ रेलेवेंट परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड गुड, ये तो बड़ा ही सीधा था, राइट। 44.119 दैट इज 12 और 44.223 अपना कुछ आया था। ये लोग ने 2 डेसिमल राउंडिंग ऑफ किया है, डन, दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। रियल रिटर्न टू द यूएस इन्वेस्टर, नॉमिनल रिटर्न था, इन्फ्लेशन हटा दिया, 6.08, 6.08, डन। सॉर्टेड सम था लेकिन नया था तो शुड हैव बीन केयरफुल। तो इस लाइंस पे यहां मेरे पास कोई सम नहीं है। जहां तक मुझे आया है, मेरे एक्स्ट्रा सेगमेंट में एक क्वेश्चन मैंने डाला है which is again from an old MTP RTP, I don't recollect, maybe a year or 2 back only, बहुत ओल्ड नहीं है। तो इस तरह के सम आजकल फैशन में, ध्यान रखिएगा, राइट। नाउ एग्जाम में नहीं पूछा गया आज तक, बट as now it is featuring of late, so we should keep a keen eye on this one, very very important। मिस्टर मैमन, अब क्या नाम है बंदे का, ठीक है, और आई एम नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपरली। मिस्टर मैमन आएगा, ठीक है। इन्वेस्ट इन लिस्टेड बॉन्ड इन यूएस इफ द प्राइस, वो इंडियन इन्वेस्टर अब यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का केस है। द प्राइस ऑफ बॉन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज $100 एंड इट इज $103 एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 3% मिल रहा है उसको, एंड द कूपन रेट इज 3% पेबल एनुअली। तो 103 प्लस 3 टोटल $106 हो गए बंदे के पास एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्म्स ऑफ होम कंट्री करेंसी, यानी INR में रिटर्न चाहिए। इफ USD इज फ्लैट 6%, राइट, यानी एक्सचेंज रेट में देयर इज नो चेंज। USD अप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 3%, ऑब्वियस सी बात है, एन इंडियन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड एंड USD अप्रिशिएट्स बाय 3%, जबरदस्त बात हो गई ये तो। शी इज गेटिंग 6% रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन US एंड a 3% करेंसी अप्रिसिएशन। $9.18 रिटर्न, थोड़ा फ्रेश टाइप का सम है लेकिन उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। USD डेप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर, लगाओ जल्दी। $2.82। लास्ट में इंडियन रुपी अप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 5%, तो हमको US डेप्रिसिएशन चेक करना पड़ेगा, राइट। दैट विल बी हाउ मच, 0.5 minus 1 into 100, तो 4.762 is the USD depreciation। तो 1.06,
N5238 है तो 24 लिख देता हूं मैं इधर। .9524 फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। विल योर आंसर डिफर इफ मिस्टर मैमन इन्वेस्ट इन बॉन्ड जस्ट बिफोर द इंटरेस्ट इज पेबल, राइट। इस प्रकार का सम भी कुछ खास आया नहीं है आज तक, राइट। सो प्लीज कीप अ कीन आई ऑन दैट। यूएस डॉलर रिमेन्स फ्लैट 6%, ये हो गया। यूएसडी अप्रिसिएट्स 9.18 हो गया, 2.82 हो गया। इफ इंडियन रुपी अप्रिसिएटेड बाई 5%, ये हमारा आंसर अलग है इनसे। हमारा आ रहा है पॉइंट। चलिए चेक कर डालते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि मैंने जो किया वो करेक्ट ही है, वो मुझे पता है। लेट FER टुडे बी, कुछ भी डालो, अभी बता देता हूं। सही होगा तो मालूम पड़ जाएगा, राइट। इंडियन रुपी अप्रिसिएट्स बाय 5%, राइट। ये लिखा ना इन लोगों ने, अप्रिसिएट बाय 5%। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रुपी अप्रिशिएट हुआ है, करेक्ट, 5%। So at the end of the year, $1 would be how much? डॉलर की पावर घट जाएगी, रुपी अप्रिशिएट हुआ है, रुपी कैन बाय मोर डॉलर्स नाउ। 71.42857। ठीक है, ये बंदे ने पैसे डाले, कुछ भी अमाउंट ले लो यार। लेट अस से इन्वेस्टेड $100, राइट। $100 आ गया भाई। ये कौन है? इंडियन इन्वेस्टर है ना, ठीक है, इंडियन इन्वेस्टर। $100 विच वाज इक्वल टू हाउ मच टुडे? टू 75, यानी ₹7500, ठीक, आज के रेट पे, ठीक है। और उसने $100 कन्वर्ट कर दिया, इज गेटिंग $106 बैक आफ्टर द ईयर, करेक्ट, इनटू कन्वर्जन रेट ऑफ 71.42857। हाउ मच इज गेटिंग होम? लंबे तरीके से समझा रहा हूं आपको। 6 into 71.57 is getting 7,571.428. 1,571. What is his return? .9524। ये आंसर सही नहीं है, कोई भी रेट डाल लो, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग बहुत पूछा नहीं जाता है, लेकिन अब आ रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में कोई दुविधा है, आपको लग रहा है कि आंसर सही नहीं है, एक्चुअल में आप करेक्ट हो, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने ऐसा क्या तो कर दिया कि आंसर ऐसा बन गया, डायरेक्ट माइनस किया। जिस करेंसी में द करेंसी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग, उसका अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऐसे एडजस्ट होता है। यू हैव इन्वेस्टेड इन यूएस, तो यूएस डॉलर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, ना कि इंडियन रुपी का अप्रिसिएशन नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीडीआर वाला सम भाई।
Mrs. Raghu Limited is interested in expanding its operation, planning to install manufacturing plant at US. It requires 8.82 million USD. जो भी नए सम्स है मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में करा रहा हूँ. ये GDR सम है, इसमें ज्यादा कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन एक ट्रिक यहाँ दिया इन लोगों ने. ये एक सम आया था, मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट रीड दिस. It requires 8.82 million US dollars net of issue expenses of flotation cost to fund a proposed project. GDR are proposed to be issued to finance this project. Estimated flotation cost of GDR is 2%. तो 8.82 divided by 0.98 आपको total GDR float चाहिए. Total quantum, right? Gross quantum आपको मिल जाएगा. Expected market price of the share at that time of issue of GDR is 360, face value 100. Each GDR will represent 2 underlying shares, यानी 720. Right? Issue price should be 10% discount, यानी 0.90 और 0.98. फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल के सब इतना नेट अपने हाथ में आना चाहिए. 720 into 0.9 into 0.98, 635.04, 635.04. एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, इसको बाईपास करके भी हम लोग कर सकते हैं. डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड एट द रेट ऑफ 20% विद अ ग्रोथ ऑफ 12%. सो कॉस्ट ऑफ जीडीआर क्या आ जाएगा? डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड 20%, 20 फेस वैल्यू 100 ऑफ ₹40 डिविडेंड. राइट, कॉस्ट ऑफ जीडीआर आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 5.04. गॉर्डन मॉडल का केई एप्लीकेशन प्लस 0.12. गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है भाई? P0 equals to D1 divided by G. राइट. सो अगर हमने इसको थोड़ा ट्विस्ट किया, क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर इंटरमीडिएट. राइट, यहाँ हम लोग को नेट पी लिखना है. ठीक है, नेट प्राइस जो हमको हाथ में आ रहा है, पैसा, द मनी दैट वी गेटिंग, प्लस 0.12. 18.302988 आ रहा है. So 18.30 is the cost of GDR. So required to compute the number of GDRs to be issued and the cost of GDR. Cost of GDR हो गया, number of GDRs to be issued वो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. Different methods. I'll just calculate the answer over here. 8.82 million. 72. अरे शाबाश. Compute the number of GDRs to be issued. Right, because I have adjusted in 635.04 everything. Right, flotation cost, discount on the market price, सब कुछ. तो 8.82 into 72 divided by this price, we'll get 1 million GDRs to be issued. That close. Right. Cost of GDR भी निकाल लिया. What is the suggestion? If the company receives an offer from a US bank willing to provide an equivalent loan with an interest of 12%, by we should go for this option. ठीक है. How much company can save by choosing the option as recommended by you? माइनस कर दो 6.3%. ठीक है. नंबर ऑफ GDR to be issued, cost of GDR. ठीक है. Should accept the offer 6.3%. Close. नेक्स्ट. ऐसा सम आया था? हाँ आया था, लेकिन इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं था, बता रहा हूँ मैं आपको. ओमेगा लिमिटेड इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस, इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. राइट, ये आया था मई 2018 में. ओमेगा सम काफी फेमस है. द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ GDR is 250, फेस वैल्यू 100, 2 shares. Underlay each GDR, 4% discount. This time we had a greater discount, 15% dividend growth rate, expected exchange rate. Right? ठीक है. You are required to compute the number of GDRs to be issued, cost of GDR, the help of following. यहाँ comparative analysis आ गया. So it was little bit pepped up some, लेकिन बहुत manageable. Now we come to interest rate risk management. This is the sum
I very much recollect पुराना समय ये textile manufacturer वाला. I'll take you to the sum and I have a lot of issue with this sum. Correct? क्योंकि इसका आंसर नहीं बन रहा है. Right? So textile manufacturer is taking floating interest rate loan of 40 lakh on 1st April 2012. The rate of interest at the inception of loan is 8.5% interest to be paid every year on 31st March, and the duration of loan is 4 years. Suppose in the month of October 2012, the Central Bank of the country releases the following projections about the interest rate likely to prevail 1, 2, 3, 4. Right. Show how the borrower can hedge the risk arising out of expected rise in the rate of interest when he wants to peg his interest rate. यानी ये strike हो गया, सीधा cap का केस है ये, right? Cap floor collar, OTC derivative. Assume that the premium negotiated by both the parties is 0.75% of 40 lakh. 2.75%. कितना आएगा? 30,000. To be paid on 1st October 2012, and the actual rate of interest on the respective due dates happens to be as follows. This is RBI projections. These are the actuals. Show the settlement will be executed on the prospective interest due dates. मेरा कुछ कहना है इस सम के ऊपर, पहले बता दे रहा हूँ आपको. इसका आंसर मुझे एकदम नहीं जम रहा. And I have a reasoning behind it. ये देखिए, textile manufacturer number 2013, 6 marks. Right? Same 8.5 40 lakh, 8.5 October. RBI projections ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं है. प्रीमियम टू बी नेगोशिएटेड 0.75% rates. See, when you're studying cap, keep one thing in mind. कि obviously the cap seller is not going to give you a strike which is below the first interest rate. Max it can be equal or above. 8.5% is the first interest rate going from 1st April 2012 to 2013. And that was the strike that was decided. Right. So first, there is obviously no settlement. The rates get reset on 31st March 2013. Right. 10.2%, which is applicable for 13-14 cycle. So there has to be no give and take. अब मुझे एक बात बताओ. That I have taken a loan, right? 40 lakh rupee का loan लिया, which the interest rate would be reset every year, and it is a 4-year loan, right? So my interest rate for the first year would be decided today, obviously. Correct. If you say to me, भाई loan ले जाओ भावेश सर, यार आप तो घर के आदमी हो, ठीक है? After 1 year, whatever would be the prevailing interest rate, you pay me for that for the first year. तो भाई कोई सेंस ही नहीं बन रही बात की. I want to, whatever high or low, I want to know the first year's interest rate now. Right? सर ये तो बड़ी लॉजिकल बात है, आप इतना क्यों चीख के समझा रहे हो? The reason over here is they have taken 8.75%. उस समय भी, पुराने समय भी वही किया था इन लोगों ने. They have taken 8.75%, 0.25% का सेटलमेंट करवाया था. कोई होगा ही नहीं भाई. 8.75 would be applicable from 13-14 cycle. Right? तो जो 0.25% का सेटलमेंट है, 5 साल की लोन है. 13 पे फर्स्ट, 14 पे सेकंड, 15 पे थर्ड और 16 पे फोर्थ, वैसे पेमेंट्स हो जाएंगे. 13, 14, 15, 16. सो बेसिकली 16 का जो एंड रेट है, एंड 16 का रेट है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर 16-17 साइकिल, व्हिच इज नॉट इन पिक्चर एट ऑल. राइट? तो पहला सेटलमेंट मेरे हिसाब से 10,000 का होना चाहिए. राइट? वो कब होना चाहिए? 14 एंड पे होना चाहिए. राइट?
फिर 0.5 डिवाइड बाय 100 into 40 lakhs, 60,000 का नेक्स्ट सेटलमेंट कब होना चाहिए? 15 एंड पे होना चाहिए, राइट? लेकिन ये आरबीआई प्रोजेक्शंस है, तो एक्चुअल्स नहीं है, तो सेटलमेंट नहीं होगा इसमें. दिस इज प्रोजेक्टेड सेटलमेंट्स, राइट? दोनों कर देता हूं, अभी 2 मिनट लगेगा. $80,000, राइट? इसका कोई रोल ही नहीं है मलिक. The moment it goes below the strike, there wouldn't be any settlement. I think because this is the reason they wanted to pitch this in 7.75, right? एक स्पिन देना चाहते थे सबको. ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो 16-17 साइकिल पे 17 एंड पे जब पेमेंट होगा तब एप्लीकेबल होगा. बट आई हैव नो पेमेंट ऑन 17 एंड, राइट? ठीक है. नाउ 4 इयर्स का लोन है मलिक. एक्चुअल सेटलमेंट दिखा दे रहा हूं आपको. 10.2 एप्लीकेबल होगा 13-14 साइकिल के लिए. बहुत ही लॉजिकल बात है ये. लुक एट द आंसर्स एंड ट्राई जस्टिफाइंग इट. वैसे नहीं होता ना. एक 15 को सेटलमेंट होगा, 16 को सेटलमेंट कितना होगा? 0.75 के हिसाब से होगा. यहां भी इन लोगों ने डाला 8.25 ताकि कैप सेटलमेंट ना आए. दैट डजंट कम इनटू पिक्चर. लेकिन ऐसा एप्लीकेबल, क्योंकि 16-17 वाला रेट है. ठीक है, देख लेते हैं आंसर इनका. जो मैंने देखा है कि वही सेम पुराना आंसर ही दिया है इन लोगों ने. पूरा डिस्क्रिप्शन डाल के प्रीमियम भाई 30,000 है, 1 अक्टूबर को पे करेंगे. The buyer of the cap will receive a compensation at the rate of 1.7%. Right. आपका इंटरेस्ट भाई कैप मैंने प्रैक्टिकल्स पूरा देखा है, किया है, तो आई वॉन्ट बी ड्रॉन इनटू और सक्ड इनटू दिस आंसर. एकदम नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी स्टडी की है भाई मैंने. तो सीधा सीधा से हिसाब बता. 8.5 पे पेग हुआ था, तो 12-13 साइकिल पे एप्लीकेबल हो जाएगा. तो 13 को मैं 8.5% के हिसाब से ही पे करूंगा ना. I'll not discuss this much now. 3,40,000 है, तो कैप का सीन क्या है? That it should keep me at 3,40,000. तो फर्स्ट सेटलमेंट कुछ नहीं होगा, राइट? सेकंड सेटलमेंट ऑब्वियसली आपका 1.7 के रेट से होगा. ये एक्चुअल्स है, राइट? नॉट एज पर आरबीआई प्रोजेक्शंस. मैंने दोनों बता दिया. आरबीआई प्रोजेक्शंस के हिसाब से दिस इज एस्टिमेटेड एंड दिस इज एक्चुअल. 68, 120, 30, बस 3 सेटलमेंट्स होंगे. उन्होंने 4 सेटलमेंट कर दिए होंगे. 68, 120, 30 और चौथे सेटलमेंट में ऑब्वियसली इट्स बिलो, तो कोई सेटलमेंट होगा नहीं. बट इट इज 4 times that they have shown. ये यहाँ नहीं होगा, ये सब एक साइकिल नीचे आएगा, राइट? 68,000 बिकॉज 31 मार्च 13 को जो रेट है दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, राइट? सो रीसेट हो रहा है रेट, तो पूरा रेट अप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए 13-14 साइकिल के लिए. 13-14 साइकिल में 1.7 का डिफरेंस आ रहा है, तो 68,000 का सेटलमेंट यहाँ आएगा, राइट? 14 को मिलेगा बंदे को, बिकॉज I'll just tell you 10.2%, right? That is, I'll just show you one example. I know I'm just getting a bit too emotional about it, but I just want to clarify. To 40 lakh, so my interest payout is 4,08,000 at the rate 10.2%. That's 31st March 2013 rate applicable for 13-14. At the beginning of every year, I should know my rates for the year to come, right? तो उस दिन का जो रेट है 10.2 है, वो अप्लाई हो जाएगा मेरा. डन. तो मुझे 68,000 मिलेगा और मेरा नेट आउटफ्लो कितना हो जाएगा? 3,40,000, which is nothing but 8.5%. I rest my argument. Right. Now let us go ahead
कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, हर्बल बॉक्स, स्मॉल प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर, ये सम से भी मुझे काफी इश्यू है, ये सम भी आया था नवंबर 2020 में 5 मार्क के लिए। हर्बल वर्ल्ड है यहाँ, इज स्मॉल बट प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एलोवेरा, 18.5 is after tax earnings, right? It has patented beauty cream and all that, right? 50 lakh for patent right, assets is 50 lakh, of property 25 lakh, of working capital. How the patent is not shown in the books, 14% finding हुई है, ठीक है। ये देखो अपने आ गए आरटीपी पे, सेम थिंग, एलोवेरा, earnings have averaged around 18.5 lakhs after tax। यहाँ मेरी समस्या ये है कि डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, I'm saying that no you have to give, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देते तो सम ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता, राइट। So over here I have to take earnings after tax equals to no PAT, right? Right. ये कैसे पॉसिबल है? डेट है ही नहीं, लेके चलना है अपने को, राइट। देयर इज नो डेट, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन डेट, राइट, सीधा चलते आएगा, समझ रहे हो। डेट ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन डेट ही नहीं है, तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका हिसाब, क्योंकि नो पैट के लिए क्या होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन डेट डिडक्ट होगा, फिर अमाउंट आएगा, फिर उस पर टैक्स लगेगा, राइट, फिर नेट अमाउंट आएगा, फिर उसमें एड बैक होगा कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट पे आउट, राइट, नेट ऑफ टैक्स शील्ड, वो एड बैक हो जाएगा। तो अगर डेट है ही नहीं तो ये सीन बन सकता है, राइट। pretty easy over here, 125 पेटेंट है, बुक्स पे नहीं है, बट पेटेंट इज द रीजन दैट दे आर मेकिंग द मनी, सो यू हैव टू ब्रिंग इट बैक, प्लांट और वर्किंग कैपिटल, राइट। तो वन टोटल 125 हो गया, इनटू तो कैपिटल चार्ज कितना बन जाएगा, 5 into 0.14, 17.5, 18.5, हम लोग नो पैट लेके चल रहे हैं, तो EVA, अगेन से पार्डन मी फॉर माय हैंड राइटिंग, बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है। चलो फिर नेक्स्ट, मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रैक्टिकल है। B Limited wants to acquire S Limited and has offered a swap ratio of 2:3, 2 shares for every 3 shares of S Limited. Following information is available, equity shares outstanding, right, so 1,80,000 into 2/3 is 1,20,000. EPS P ratio, price quoting per share on BSE before merger announcement. The number of equity shares to be issued to B Limited for acquisition of S Limited, 1,20,000 अभी कैलकुलेट कर लिया अपन ने। What is the EPS of B Limited after acquisition? बड़ा सीधा सीधा सा हिसाब है, 21 लाख प्लस 4,50,000, यही कर देता हूँ, 21 लाख प्लस 4,50,000, काफी रन ऑफ मिल सम है, तो आई थिंक आई कैन जस्ट राइट द आंसर्स एंड गो अहेड इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन। नया कुछ है नहीं इसके अंदर। 3.5 for 1666, so ये आ गया EPS combined entity का, that everything will become B Limited to determine the equivalent earnings per share of S Limited and calculate gain or loss to shareholders of क्या है भाई S Limited, 0.5417 into 2.3611 to 2.3611, इक्विवेलेंट यानी उसके शेयर रेशियो से आपको एडजस्ट कर देना पड़ेगा, come to 2.31, that is an accretion or dilution, dilution है भाई, how much, 0.138,
0.14 के आसपास आ जाएगा। ये डाइल्यूशन बन जाता है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन अज्यूमिंग पी लिमिटेड पी मल्टीपल रिमेन्स अनचेंज्ड। किसका भाई? बी लिमिटेड का, जो मैं क्लास में हमेशा बताता हूँ, कुछ नहीं दिया है तो acquires P ratio remains the thing, the benchmark after acquisition, right? तो 3.5417 into 10 कर दो, 35.417। Determine the market value of the merged entity into 7,20,000, right? 25 lakh, sorry, 2 crore 55 lakh 240। तो रफली उतना ही आ जाएगा, 2 करोड़ 55 लाख आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स 1,20,000, 3.54 इन लोगों ने राउंड ऑफ किया। डाइल्यूशन बाय 0.14, 35.4। इनका आंसर थोड़ा अलग हमसे, क्योंकि इन्होंने राउंड ऑफ फिगर पे काम किया है, राइट। हमने कितना लिया था? 35.417 लिया था। इन लोगों ने पूरा 40 कर दिया है, राइट, बिकॉज दे राउंडेड इट ऑफ हियर इटसेल्फ। तो नंबर में हल्का सा चेंज आएगा, राइट। आर वाज 2 crore 55 lakh 240, राइट। कम से कम यहाँ 2 ले लेते हैं, 42 ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। नाउ जो लास्ट पार्ट है उसमें मुझे थोड़ा इशू है। ऐसा कुछ आया था, पहले देख लेते हैं। काफी देखिए सिमिलर सम है 2018 का, 3212 का। यहाँ रेशियो दिया है 1:2 दिया हुआ है। फिर क्या पूछा है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो सब बाकी डेटा भी काफी सिमिलर है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑन एक्विजिशन ऑफ मंटू लिमिटेड, EPS ऑफ टट्टू लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, राइट। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ मंटू लिमिटेड। What is the expected market price per share of Tattu Limited after acquisition, assuming its PE multiple remains unchanged? Determine the market value of the merged firm, right? ये भी आपने किया है तो एकदम खुशी वाली बात है। लास्ट पार्ट जो है, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार देख लीजिए। After the announcement of merger, price share of S Limited rose by 10%। तो कितना है भाई? 17.5 है into 1.1, 19.25 आ गया इसका दाम, right. Mr. X, an investor investing 10,000 shares, having 10,000 shares of S Limited, is having another investment opportunity which yields annual return of 14%, is seeking your advice whether he needs to offload the shares of S Limited in the market or accept the shares of B Limited and go ahead, right. तो इसमें मेरा आंसर और इंस्टीट्यूट के आंसर में काफी फर्क है, अप्रोच में फर्क है, राइट। ये लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट अर्निंग्स कितना आया था? 2.361। तो ये लोग E/P यूज कर रहे हैं, राइट, यानी द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर। So they would be getting an answer of 12.265. What is the company earning for us? 2.361. What the market price? Market price is acquisition. अभी shares change hand नहीं हुए, just market information आया है, right? And we have not given our shares for the purpose, right? तो हमको S Limited के shares दे देने, हमको B Limited के shares मिलेंगे, right? That has not happened. The market has reacted robustly to the news. The share price went to 19.25, right? And what is the earnings per share on now basis, right? Earnings per share post acquisition would be 3.5417, but number of shares would obviously reduce. So if I backward that, bring it to current shares, I will have 2.361, right? क्योंकि ये जो हिसाब है 3.5417 is based on 3 shares we give and 2 shares we get, उस हिसाब से है।
Now we are basically bringing it back to 3 shares that we have. We get 2.361 as our earnings per share on a price of 19.25. How much is the earnings? It's a return of 12.265% and he is getting a 14% opportunity. The institute says, भाई दे दो. Merger acquisition is such a chapter that where you can have a contradictory answer. तो मैंने जैसे सॉल्व कर रहा था, मैंने को पहले दिमाग में कुछ अलग ही आया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ. वो सीधा सीधा हिसाब है. पी मल्टीपल ये लोग बोल रहे हैं किसका अप्लाई हो जाएगा महाराज? किसका अप्लाई हो जाएगा पी मल्टीपल? बी लिमिटेड का, अक्वायरर का. शेयर प्राइस कितना आ जाएगा? 35.417. तो इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस अगर मैं निकालूं कितना आना चाहिए? 35.417 into 253. ठीक है, 23.611. So even though the market price will jump to 19.25 on an equivalent basis, right? On an equivalent basis, we should get for 2 shares of B Limited, we'll have a market price of 35.417. So bring it to 3 shares, right? That we currently now have. It should be 23.6113. आ रही बात समझ में? उसको मैं प्री एक्विजिशन सिनेरियो में इक्विवेलेंट रेट पे ले आता हूं. सो आई सी अ ह्यूज अक्रीशन फ्रॉम 17.5 टू 23.6113 फेयर प्राइस. 19.25 से भी बहुत ऊपर है. कितना ऊपर है ये? 23.6113 डिवाइड बाय 19.25 माइनस 23.6113 divided by 19.25 minus 1 into 1. 22.656 is still the headroom in percentage increase. 6561. There's still headroom. After this 10% decrease, there's still a 22% odd, 23% odd headroom. Answer changed. So they can keep the shares, right? यहाँ ये लोग ने देखिए दिया है 2.36 is the equivalent earnings. Share price jumped, so they get 12.26% return, right? On the basis of earnings, so Mr. X having another opportunity to earn 14% is expected return. S Limited is advisable to offload. अब बोल रहा हूँ अभी भी हेडरूम है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ स्ट्रेस ले रहे हो? जैसा मर्जर हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा प्राइस बढ़ जाना चाहिए, तो नो कॉस्ट फॉर बाइंग, राइट? चलिए, तो यहाँ मेरा आंसर उनसे थोड़ा अलग है और यहाँ ऑब्वियसली डेसिमल राउंडिंग ऑफ की वजह से आंसर हल्का अलग आया है. ऑल सेड एंड डन, इट्स ऑल सॉर्टेड, राइट? सो सम्स दैट आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस वेरी वेरी क्विकली बता दे रहा हूं आपको. जो थोड़े नए सम्स हैं उस पर ध्यान देना है. कहाँ गया भाई? भाई आ जाओ. ये तो क्लासरूम मटेरियल निकल गया भाई. यहाँ है, चलिए. Because I copy pasted the sums from my classroom material to show which attempt they belong to, right? The security valuation sum number 1 must do, right? सब कर रहे हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि थोड़े फ्रेश नए हैं, राइट? 3 सेमी फ्रेश टाइप से, सेमी फ्रेश सम्स अपन को बहुत मिले हैं, राइट? ये जरूर कीजिएगा. नंबर 8, 9, ये 3 सम 1, 8 और 9 की ज्यादा फोकस रखिएगा. थोड़े फ्रेश है, राइट? मजा आएगा. एंड
what better that we practice and it turns up in the exam. Nothing like it. So ये हो गया मेरा RTP पे मैंने जितना जल्दी ट्राई किया करने के लिए, राइट. जहां मुझे लगा था कि कैलकुलेशन ज्यादा है और सम रिपीटेड है, so I've not spent much time. I've just written the numbers, showed you the calculation. Where the calculations were short, we just quickly did it, and where I thought there was dichotomy in answers, I've put that across as well. Hope it helps you in the May 22 attempt. You will do amazingly well. Have faith. ठीक है. Goodbye. Happy learning.